लाइव हो गया। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ओपन कर दें। कर दिया। अच्छा, फर्स्ट वीक में तो हम लोगों ने ना जस्ट इंट्रो ही पढ़ा था कि आइट्स में मतलब उसके चारों मॉड्यूल्स होते हैं और उसमें ना क्या क्या होता है। तो उसके बाद ना इसके दो ऑप्शंस हैं। एडीएक्स का एक कोर्स है जो हम लोगों ने पिन कर दिया था इसी ग्रुप के अंदर, या आप ऑनलाइन चाहें तो वहां से भी टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 घंटा हो सकता है, तो उस 1 घंटे में ना जस्ट एक मॉड्यूल हो सकता है, तो हम डेली ना उस टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने एक क्यू कार्ड और उसके तीनों पार्ट भी ना सेशन में जो है वो पिन किए थे, एक पिक्चर सेंड की थी, तो हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी थी। तो उसके ऊपर जो है आज हम लोगों ने उसी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी थी। आप अगर चाहें तो मतलब स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, लाइक स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, तो आप बता सकते हैं कि आप मतलब राइटिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीडिंग से या लिसनिंग से। स्पीकिंग थोड़ा इजी होता है, उस वो इसलिए होता है कि आप बाकी चीजें तो खुद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस पर फोकस भी कर सकते हैं। लेकिन स्पीकिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और सेकंड चीज ये होती है कि जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके आइडियाज जनरेट होते हैं। जब आप खुद आइडियाज जनरेट करते हो ना, आप खुद से एक स्टोरी क्रिएट करते हो, तो वो आपके लिए ना हेल्पफुल होती है। जब आपने राइटिंग करनी होती है ना, तो वहां पे भी आपको एक जनरल सा टॉपिक ही मिलता है, तो वहां पे भी ना आपको खुद से अपने आइडियाज क्रिएट करने होते हैं और एग्जाम्पल देनी होती है। तो इसके लिए ना मीन्स के मुझे बेस्ट ये लगता है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी डिपेंड करता है लाइक आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि स्पीकिंग करते हुए बहुत से लोग ये फील करते हैं कि उनको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, या जो भी इशू होते हैं तो उससे रिलेटेड आप जो है वो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे ये कुछ स्पीकिंग के ना सैंपल्स थे, तो यहाँ से ना आप इनको रीड करके ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें से रीड करें ना, तो इसमें से बहुत से टॉपिक हैं, या आप टॉपिक पे किस तरह से बात कर सकते हो, अपनी चीजों को किस तरह से लेके चल सकते हो, ये उसका ना सैंपल था। तो इस पे भी ना आप लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये बहुत से एक मैंने पीडीएफ तैयार किया था, तो इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर ना उन्होंने सैंपल बनाया है, जिसमें से जनरल बातें की हुई हैं और आपके बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन, आपका चाइल्डहुड, और इस तरह के इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ से आप इसको स्टडी करके ना अपने लाइक जैसे आप अपने मुताबिक इसको ना चेंज करके उसमें बोल सकते हैं। मतलब आप यहाँ से ना इसको आइडियाज ले सकते हैं कि आपने ना किस तरह से बोलना है। वैसे आज हम लोगों ने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी थी, तो आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पीकिंग में तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि हम लोग मुझे लगता है आज पार्ट 1 की ना फर्स्ट इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें करनी किस तरह है, मतलब कि क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हमें हाँ जी, मैंने बताना होगा क्वेश्चन उसमें? पूछना है, जिसने पार्टिसिपेट करना है उसने आंसर देना है, उसके बाद हम इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे ना। पहले तो ये है ना कि कॉन्फिडेंट आना चाहिए, कोई बोलेगा तो बोलने के बाद ही इसका कुछ हो सकता है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि आपने ना इसको, उसने अगर आपसे पूछा ना व्हाट डू यू स्टडी, तो इसका ना आपने 3 to 4 सेंटेंस में जवाब देना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। मतलब आप जो चीज भी पढ़ रहे हो आप उस पे तो बोलना
इजी होता है ना। बाकी ये है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप में वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्पीकिंग कर लेते हैं या आप बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर भी आपका ना प्रेशर जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, जिस दिन आप पेपर देते हो ना उस दिन थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए आपको मतलब इस पे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि समटाइम अगर आपको स्पीकिंग पार्टनर मिल भी जाता है तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोग सीरियस होते हैं, कुछ लोगों ने टेस्ट देना होता है, नहीं देना होता। तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जितनी मिस्टेक करेंगे तो आप उससे सीखेंगे। बहरहाल ये है कि फर्स्ट टाइम हर बंदा मिस्टेक करता है, अब आप पे डिपेंड करता है। कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है ठीक है, नहीं अगर आप इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो इसका सोल्यूशन फिर यही है कि हम सेशन लाइव कर दिया करेंगे, तो हर बंदा ना क्या कहते हैं अपना ईडीएक्स पे जाके ऑनलाइन उस पेपर की प्रैक्टिस कर सकता है। सही हो, चले मैम, मैं तो कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलें मैम ठीक हम है। ऐसा कर सकते हैं कि सब एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे आप जैसे क्वेश्चन पूछ दें, 1 बाय 1 है ना, सब एक एक का आंसर दे दें, या ऐसे कर दें। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे ये क्योंकि होगा सब कि उसका ये भी फायदा होता है दो लोगों की निस्बत अगर आप ज्यादा लोगों के बीच में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, उसका ये फायदा होगा, एक तो आपकी मिस्टेक आपको बताने वाले ज्यादा होंगे, आपका कॉन्फिडेंट भी बूस्ट होगा। और थर्ड चीज ये है कि हर बंदा जब डिफरेंट आंसर देगा ना तो आप उसके आइडियाज खुद पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब आप उससे कोई आइडियाज ले सकते हैं कि आप इस टॉपिक को इस तरह से भी बोल सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर करके सेंटेंस उसको ज्यादा कर सकते हैं अपने सेंटेंस को। यस। चलो ठीक है, तो पहले वाले टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू स्टडी? चले, हैंड रेस कर लें, आई थिंक सो, या किस तरह चल सकता जिसको इशू नहीं है सर आप बोल लेना, कोई इशू नहीं है। अगर कोई और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, जो सीरियस है जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, जाहिर सी बात है वो पहले ही बोल लें। जिनको है। नहीं सही है तो फिर क्या कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो चले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट का है, व्हाट डू यू स्टडी? तो आई एम डूइंग मास्टर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामाबाद। ओके। तो सेकंड वैसे उसने यही पूछा था वेयर डू यू स्टडी, तो आपने ये इंस्टीट्यूशन का नाम पहले ही बता दिया। मैम अभी व्हाट डू यू स्टडी का क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वाले स्टडिंग computer science at NED University, where I have doing different courses about information technology and networking and computer science related database. ओके, That's it. वेयर डू यू स्टडी? I study at the National University of Science and Technology. Its subcampus, the Military College of Science Schools, I think is situated in at Adiala Road, Rawalpindi. Do you like the subject that you study and why? Uh, Yes, I like the subject that I study because it pretty much into my domain, and they are increasing my domain knowledge and other stuffs. Okay. Do you plan to spend many years overseas? No, Okay, I over. don't think so. Okay. Okay. Are the subject that you are studying popular in your country? Yes, kind of. You can say. Okay. What are the main aspects of your subject? My subjects focus on the cyber security and information security in the software domain and technology domain. If you had the chance, would you change your subject? Yes, can be.
Okay, do you want to do job in the same field as your subject, your studies? Yes, I prefer to be do job in the same field that I am studying. Okay, so second person जो इसका इन क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है, आप वो कर सकते हैं. मैम मैं कर रहा हूँ. Okay, I think Second where question. do you study? Second I question am था. I am studying at NED University, which is a main camp, which is a government university, and they are situated in Karachi, and the main camp. Okay, do you like the subject that you study and why? Yes, my favorite field is computer science, so that subjects are taught in this field, which I like most. Okay, do you plan to spend many years overseas? Yes, I have planned to study abroad for my master, but if I got opportunity over there, then I will. Okay, are the subject that you are studying popular in your country? Yeah, nowadays in our country, their IT field is a very vast field, so the art in that subjects which are study in our country are very famous. Okay, what are the main aspects of your subject? Basically, my domain is IT, so their main focus on databases, data structure, and artificial intelligence, cyber security are there. Okay, if you had the chance, would you change your subject? If it's possible, then I will change the sequence of the subjects, not the entire subject. Okay, do you want to do job in the same field as you are studying? Yes, they're one of the best field in the world, computer science. So I will work in the same field. Okay. अच्छा, तो अब इसमें ये है कि जैसे उसने पहला क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट डू यू स्टडी, तो आप इसका ये आंसर कर सकते हो, वेल I am studying one of the most famous subject in my country and nationally and even internationally, because that is IT related subject, and IT is one of the most favorites, like most famous subject in all over the world. Where do you study? Well, I am doing in a most famous university, most famous institution in my country, so that is very good in practical field, so that's why I choose that university, and that is very convenient to me to travel from my hometown to my institution. Okay, उसके बाद उसने पूछा do you like the subject that you studies and why, तो आप इसके बोल सकते हो yes, I like my subject mostly because I am a media student, or I am a IT student, so that's why that field is very famous, and the like practical work is very good in my country, like in my hometown, sorry, in my city बोल सकते हो आप, या in all over the world. ठीक है, do you plan to spend over many years overseas, तो आप इसका ये बोल सकते हो well, I am a student and I am planning to go abroad for my further education, and side by side we are living in a underdeveloped country, so that's why I would like to go abroad for education and to learn international skills, so that's why I have planned to be overseas in future maybe. Are the subject that you are studying popular in your country, तो आप इसका आंसर ये दे सकते हो yes, my subject is one of the most popular subject in my country as well in international level. Okay, what are the main aspects of your subjects, तो आपके जो भी field related मतलब आपने जो major courses पढ़े हैं ना, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, और आप IT से related इसकी जो अपनी field पे implement करते हो, तो आप इससे related ना वो भी बता सकते हो. ठीक है, if you had the chance would you like to change your subjects, तो इसमें बेसिकली पता है क्या होता है, आप लोगों को ना नेगेटिव पॉइंट नहीं बताने, लाइक आपने ना ये नहीं बताना कि मैं मतलब अपनी फील्ड के जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं या जो मैं पढ़ता हूँ मैं इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि
आपको ये चाहिए कि आप ना अपनी कंट्री के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, या जो आप पढ़ रहे हो ना उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू जो है आपका देना चाहिए। तो इसलिए इफ यू हैड द चांस यू वुड यू लाइक टू चेंज योर सब्जेक्ट, तो आप कह सकते हो नो, बेसिकली आई डोंट वांट टू चेंज माय सब्जेक्ट बिकॉज माय सब्जेक्ट इज मोस्ट फेमस एंड दैट इज वेरी गुड इन studying and for the field work, so that's why I don't think so I changed my subject, and I had no plan to do so. Do you want to do job as in the same field? तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि yes, my field is very good in practical work, and there is a lots of like companies or options to do work in nationally and internationally, so my field is very vast and there is a lots of option in my field to join and to be work in a good way. ठीक है, अब इसमें ये है कि आप ना ये पार्ट 1 था, तो इसके अंदर ना 3 से 4 सेंटेंस में आपको बात करनी है। इन केस अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप किसी एक चीज का आंसर नो में दे सकते हो। तो जब आप प्लान कर रहे हो ना, आप लाइक आइट्स दे रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप प्लान कर रहे हो कि आप बाहर जाना चाहते हो, तो आप मतलब इन द फ्यूचर आप ओवरसीज बनना चाहते हो। अब ओवरसीज का मतलब यही होता है कि जी आप आउट ऑफ कंट्री या अब्रॉड जो है वो प्लान कर रहे हो कि आप वहाँ पे जो है वो रहना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये होता है कि वो कहता है कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्राइड हार्ड बट यू वर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, अब इसमें ना उसने जितने भी आपसे ये ना डिस्क्रिप्शन पूछी होगी ना, पास्ट सेंटेंस में पूछी होगी, और क्या कहते हैं इसी तरह के 4 ऑप्शन बने हुए होंगे और आपको 4 ऑप्शंस को रेडी करना है। और चीज ना क्यू कार्ड में सारे ऐसे ही होंगे, डिस्क्राइब होंगे। 95% क्यू कार्ड वही होंगे जो आपसे उन्होंने पास्ट सेंटेंस में पूछा होगा और आपको जो आंसर करना है ना पास्ट सेंटेंस में करना है। ठीक है, तो आप इसमें ना सबसे पहले ना एक आपने सेंटेंस बनाना है जस्ट इस चीज से कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्राइड हार्ड। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो कि लोग ना बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करते हैं किसी भी चीज को सक्सेस हासिल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप उसको हार्ड मतलब प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ना आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। सो इसके बाद आप सेकंड सेंटेंस बोलोगे, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस दैट आई हैड रिलेटेड टू दिस दैट, मतलब जो भी आपने किसी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क किया हो और आप उसको अचीव ना कर सकते हो। तो व्हेन इट वाज, अब व्हेन इट वाज में क्या है कि इसका सबसे इजी ये है कि क्योंकि आपने इसको पास्ट में बोलना है, आप इसको बोल सकते हो 1 मंथ अगो, 1 ईयर अगो, आप इस तरह से मतलब करके पहली चीज आप इसका पॉइंट ये बना सकते हो। ओके, बट यू ट्राइड, अब वहां यहाँ पे इसने ये पूछा है कि आपने क्या करने की कोशिश की और आप उसमें नाकाम हो गए, तो आप इसका सिर्फ एक वर्ड लिख सकते हो सकता है कि जी आपने कोई टेस्ट देने की कोशिश की हो, या आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, या हो सकता है कि आप किसी चीज में ए ग्रेड लेना चाहते हो और आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप जस्ट एक पॉइंट लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ना, व्हाई इट वाज नॉट सक्सेसफुल, आप उसकी रीजन बताओगे कि वो किस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आप ना उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सके। ओके, और इसके बाद उसने पूछा हुआ लास्ट पे, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट, और आप उस चीज के बारे में लाइक आपने बुरा फील किया, अच्छा फील किया, तो इससे रिलेटेड आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब एक फैक्ट है ना कि आपने बुरा ही फील किया होगा, तो आप कह सकते हो कि जी आपको बुरा लगा, आप कुछ टाइम तक डिप्रेशन में रहे, पर उसके बाद आपने उसको रिजॉल्व कर लिया क्योंकि आप फिर और चीजों की तरफ मूव कर गए, तो फिर आप उस चीज को भूल गए। तो इसके लिए ना वो आपको ना क्यू कार्ड देगा जो उन्होंने अपने पेजेस बनाए होंगे एक रजिस्टर पे, तो आपको साथ एक में पेपर और पेंसिल देगा, तो उसके ऊपर आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब वो ये आपसे पूछ लेगा ना तो उसके बाद ये चीजें आपसे वो वापस ले लेगा। तो इसके लिए ना आपके पास 1 मिनट है, अगर कोई इस पे बोलना चाहता है तो अपनी मर्जी से मतलब 2 मिनट इस पे बोलना है आपने। मैम मतलब कि इसमें ये क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, हमें ये फुल पूरी स्टोरी हमें बना के जो हाँ है ना जी, प्रेजेंट ये करनी होगी, इस तरह हाँ कैसे? जी, हाँ जी, ये पूरी स्टोरी बना के आपको इस पे 2 मिनट बोलना है। अगर तो आप बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, मतलब आप बहुत अच्छा स्टार्ट लेंगे, तो इन केस 1 मिनट के बाद हो सकता है वो आपको रोक दे, या 2 सूरतें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें रोक देते हैं, पर मुझे नहीं लगता, मोस्टली ऐसा होता नहीं कि वो आपको रोके, वो आपको 2 मिनट बोलने देते हैं। इन केस अगर वो आपको स्टॉप करते हैं, 2 केसेस होते हैं, या तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो तो वो आपको रोक देगा एग्जामिनर, या आपका बोलना सही नहीं होगा तो वो आपको रोक देगा। लेकिन मैं मेरा ख्याल है कि जनरली वो रोकते नहीं है। हाँ, मतलब रोकते नहीं है, जरूरी चाहे नहीं। अच्छा हो या बुरा हो, ज्यादातर ऐसा होता है कि वो नहीं रोकते। इन केस अगर आप बहुत ही खुदा न खास्ता खराब बोल रहे हैं तो फिर वो हाँ मूव ऑन जी, करते हैं नेक्स्ट सही है, क्वेश्चन। हाँ जी।
सर अब तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो यही है कि आपको पूरे 2 मिनट्स वो बल्कि सामने टाइमर लगा के बैठे होते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, रुक रहे हैं, बोल रहे हैं, अटक रहे हैं, जो भी है उन्होंने वो 2 मिनट आपके गुजारने, और 2 मिनट गुजारने के बाद वो आपको कह देंगे कि जी अब आप खामोश हो सकते हैं। हाँ तो जी, ऐसे और लेकिन कुछ सजेस्टेड इसमें केसेस यही है, सजेस्टेड इसमें यही है कि आपने 2 मिनट के लिए अपना मटेरियल तैयार रखना है, बल्कि हाँ 2 की जी, बजाय इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 3 मिनट का सोच के बोलना शुरू करें कि हम 3 मिनट के लिए अपने एग्जामिनर को है अपने कंटेंट में बिजी रखेंगे, तो फिर जाके आपकी बात आके रुकती है 2 मिनट के ऊपर। और जब अच्छा आपकी इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी तो आपको पता होगा कि जब आप आईएलटीएस के एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो आप फ्लो में भी बोल रहे हैं और आपके 2 मिनट्स भी इजीली गुजर जाते हैं। और अभी जब वो उसने आपको रोका नहीं है तो भी आपके पास मटेरियल बहुत है बोलने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो पॉइंट्स आपके पास हैं इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ हिंट, इनको तो आपने कवर करना ही करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट एक साथ ना आता रहे। होगा ये कि अगर आप पॉइंट पॉइंट पे चल रहे होंगे ना तो आपके पॉइंट्स बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। कोशिश करें एक पॉइंट खत्म करने के बाद दरमियान में कुछ आपने ऐड किया जो लॉजिकल भी हो, फिर आप दूसरे पॉइंट पे मूव हुए, फिर आपने कुछ ऐड किया जो थोड़ा सा लॉजिकल भी हो। स्टार्ट में आपके पास एक अच्छा स्टार्ट हो और एंड करने लगे तो भी अपनी बात एक प्रॉपर तरीके से, चाहे उसने आपको रोक दिया है, लेकिन कोशिश करें खूबसूरती से आप अपनी बात खत्म करते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी कवर करें, मेरे कहने का मकसद ये है, और भी डाटा जो आपके जहन में, जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ इन्हीं का आंसर करना है, रेलिवेंटली कुछ भी आपके माइंड में आता है आप वो ऐड करें, फ्री होके ऐड करें। ये 2 मिनट आपके अपने आपने पूरा करके उठने हैं। लेकिन ये है कि स्टोरी क्रिएट करनी है ना, आपने इस टॉपिक से हट के कुछ भी नहीं बोलना, मतलब आप कहीं और चले जाएं और फिर मतलब आप इस चीज से हट जी जाएं मैम, तो जी मैम, जी मैम, बिल्कुल यही बात है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। डेफिनेटली आप जब बोलेंगे तो इसी टॉपिक पे बोलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे बोलना है। हो नहीं सकता है नहीं, कि ये अगर आपने जरूरी ये नहीं है, पॉइंट, ये हिंट उन्होंने जी जी दिया है मैम, पर मैं आपको यही पूरी मैं स्टोरी यही क्रिएट बात कर करके रही ना थी। उनको प्रेजेंट करनी है। ओके, तो अब फिर इस पे कौन बात करना चाहेगा? मैम थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिएगा कि स्टार्टिंग कैसे लें, जैसे अभी व्हेन वाज तो ये बताना है कि वो टाइम कब था, और जो अ आप टाइम व्हेन इज, इसका स्टार्टिंग कैसे कंटिन्यू करेंगे? आप इसको ये बोल सकते हो, लाइक as you know there is lots of things that people tried to achieve but unfortunately there is are some circumstances that is not fulfill or past their things, so I would like to talk about my experience related to my hard working that I want to gain something and unfortunately I don't achieve that things, so the things is that this that करके आप एग्जांपल देके उसको बोल सकते हो कि जी मैंने आप ऐसे मतलब कोई चीज भी आपने अचीव करने की कोशिश की हो, वो तो अब आपके अपने माइंड में भी तो चीजें होती हैं ना कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपने किया हो। अच्छा, आपने ना इससे अगर ज्यादातर आप सोचते रहेंगे ना कि आपने स्टोरी क्रिएट करनी और पहले से नहीं की होगी तो फिर आप सोचते रहोगे ना। आप अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट ले लो जिसमें आपने किसी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए ना बहुत हार्ड कोशिश की हो और आप उसमें नाकाम रहे हो, आप इससे रिलेटेड कुछ बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपने जी मेडिकल फील्ड में जाने की कोशिश की या आप ए ग्रेड लेना चाहते थे तो आपने उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की पर आप नहीं सक्सेसफुल हुए, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप इसमें कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हो, क्योंकि उस 2 मिनट में तो ये होगा ना कि आपने पूरी स्टोरी उनको प्रेजेंट करनी है, उसमें ये नहीं होगा कि आप सोचोगे कि आपने क्या बोलना है। बोल के तो आप प्रैक्टिस तो आपने पहले करके जानी है ना कि आपने उनको क्या बोलना है। जिनका ये क्वेश्चन था, नॉर्मली आप की अब तक की लाइफ में आपने बहुत सारे ओकेजन्स देखे होंगे, अपने भी देखे होंगे, अपने इर्द गिर्द वालों के भी देखे होंगे।
चीजों को आप जनरलाइज जब करेंगे ना, तो आपके माइंड में खुद ही उस टाइम आपके न्यूरॉन्स इतने एक्टिव होंगे। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी उस टाइम आपको इस चीज की सपोर्ट मिल रही होगी। तो होगा इस तरह से कि अगर आपकी अपनी पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपके इर्द गिर्द आपके नेबर्स का कोई एक्सपीरियंस होगा, आपके किसी क्लासमेट का कोई एक्सपीरियंस होगा, आपकी किसी कजन का कोई एक्सपीरियंस होगा, जो आपके माइंड में आएगा और आप उसको ज़हन में रख के एक फौरन से स्टोरी बना सकते हैं। चले मैं इसके लिए ट्राई करता हूँ थोड़ी सी। मैं अपने पास स्टॉप वॉच लगा के ना फिर ट्राई करता हूँ, ताकि या फिर तो फिर इसमें हो जाएगा इस सी ओके। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। After seeing the question, I think in the mind that winning or losing is not the thing that we always do. We learn something from it. So I in the past month I tried for the competition, and in which I supposed to be do good, but it not went well as per my knowledge. In the I participated in the Google hash code competition, where we have to perform the coding to solve the problem given by the Google. We are not successful in that task due to the lack of time and lack of mismanagement, which happened in the time of the competition. The competition was only for the 4 hours, so it was quite less time to go for the solution. But we do something that we can say that is good for our future, and it's extremely good for the to participate. So it felt some disheartened when we not go up to the mark, but it pushed me to the next Google competition or other competition that are coming in the next year or the coming years. So I support, I use this problem to practice and upbring my skills. Okay, anyone else who want to participate? Yes, ma'am. Okay. Everyone try, but lot of people are not success. And I have experienced that I have not to get admission in a university that I can wish to go there. It's like it was last past 2 years when I am practice when I prepare for my university to get admission at NUST University. But I try hard to get admission over there, to take a coaching, take a extra classes. But on the test day, on the test day, I get a accident, so I cannot attend that test. So that's the regret to get did not get admission. So I am in NED University, but it's very feel very awkward or embarrassed. So I did not get admission over there. Okay, anyone else?
Okay, now let's start part 3. What is your definition of being successful? अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, इसमें ना वो ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे सक्सेसफुल होने की ना डेफिनेशन बताओ, वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज योर डेफिनेशन, मींस कि आपने इसके अंदर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझते हो कि बीइंग सक्सेसफुल होने की जो डेफिनेशन है वो आपकी नजर में क्या है, तो आपने उससे रिलेटेड ना एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जो वो आपको क्यू कार्ड देगा ना, जो आपके फॉलो अप क्वेश्चन होंगे ना, अब उसने आपको क्यू कार्ड दिया ना सक्सेसफुल होने से रिलेटेड, मतलब आपने कोई चीज ट्राई की हो, तो उसके बाद जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो सारे रिलेटेड टू ना सक्सेस से रिलेटेड है। तो आप ये बताएं कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? Well, for me, being successful means that you have achieved your targets, which provide you some kind of internal satisfaction. So if I'm getting that satisfaction, it means that I'm successful. Okay. Okay, anyone else? Well, to answer this question, for me, being successful is doing something that is beneficial for your society as well. So, I mean, if I go to university, I wanted to graduate. Yes, I after some time I graduate from the university. I was successful up till now, but the real success is if I can give back to my community or my society. So I think being successful also includes whatever you can do to help out the humanity in general. And it will definitely make you feel proud inside. This is something which is giving satisfaction to you. Am I right? Okay. Yeah, definitely. Okay. What things children try to succeed in? Children try to succeed in the class by taking the top positions or top in the class. I think so. Yes, most of children have academics, so they try to best to get position like first position, second position, and try their best to get success in it. So do you think, is it the only area where children try to get succeeded in? Any one of you? I think I also add the sports where children are also active to get a success. Like Yes, you Well, have, I think might be you have. Yes, please. I think children are much more than that. I mean, uh, if you are if you're a child, only getting on the top of your class or playing some game is not the only thing that you want to do. So I think that generally children are more attracted towards gorgeous toys and or they always want to have I mean I personally think that children, if we grade them in age like from 3 to 7, maybe in that age group, children are not very much worried about their grades or their positions. They are much excited to stand first in a race or in some kind of game. But if we take as the children grow elder, they get this insight about things like positions or grades, and at that time they get more indulged towards studies and all that things. So it depends upon the age of children for me, as I think. Yeah, well, I think children usually just don't want to stop at something. They just want to do the things that are far from their approach. I mean, children do love to reach heights at their early ages, and they want to go to the market and buy delicious sweets and that sort of things. So when we talk about the things that children want to try to succeed in, for me at least, it is almost everything, every field of the life that they can get their hands on. They just want to get succeed.
if they are participating in a race, just like you mentioned, they want to get first position in the race. If they're playing a support, if they are going to the market and they are looking for different options of the sweets and candies, they just want to get the best one out of them. So I think as far as the children are concerned, they just don't want to stay at one place. They just want to move from one to another, and they just want to do better than the other one. Okay. Can the person become successful without any studies? No, Well, I don't think so. May I carry on or you? No, you should carry on. No, I don't think so. Any person who need to be successful have to gain some knowledge and to and gain some study, do some study stuff to get succeed in life. Okay. Anyone else? Well, I think studies can help you become a better man, to help you understand things a bit more in details, to help understand the scientific aspects of certain things. But to become a successful person, at least for me, studies, are not really necessary for that. I mean, well, you can just look around the globe, and you can have a tremendous amount of people who were not good in their studies, but they're still very successful, whether they're from sports field, whether they are from the technology field, whether they are from political domain. We have a lot of people that who are actually successful, but they didn't have a very I would say a vast grip on the studies. Okay. Anyone else who want to speak? If no one is speaking, then I can add. Yes, as far as this question is concerned, that to answer your question, which says that how do people know, can a person become successful? Definitely the answer is yes, that a person can become successful without studies. But the ratio of those people who became successful without studies is very low as compared to those who studied and stood outstanding in any field. Maybe you can find one Abdul Sattar Edi kind of person who didn't study much, or maybe we can include the example of Elon Musk. But the question is that how many Abdul Sattar Edi or Elon Musk can you find in the world? So we can't neglect the factor or impact of studies while considering the success. But as far as this thing is concerned, that is it possible to get success? So yes, it is possible to get success without studies. It depends upon many other factors like struggle, like your honesty towards your passion, and of course there is some factor of luck too. Okay. Anyone else? I was also Elon Musk is actually very educated. Yes, and we can say that studies, I think so, doing a No, FA and BSc. sorry. FA and, I want to get clear about Elon Musk. Maybe I heard from one of the moderators. I don't actually know him very well, but he left his studies. Am I right? Elon Musk left his studies. But they incomplete. studies, I think, I was also saying that, but they studied. No, if we say that they do the FA or matriculation, that include in studies, I think so. Okay, if you call out we about the shouldn't course talk about toppers or higher anything. studies. Fine. Maybe Mishrat, if you can add on to this thing about the studies, if we only talking about these classes or other things, maybe Okay, there are also religious people who studies their religious books, I think so.
No, So according to me, I think the definition of being successful and being educated is two different things. Because when you are being successful, that means, and that not means only you are satisfied or not. That means you earn how much you earn, how much you develop your things in your society. And being educated, that means you know how to live in your society, how you can improve the thing with your education. Education means the ability to know about the reality of the life, and being successful means, that means maybe something like your money. So that's why both things are different according to me, to being successful and to be an educated people. Well, just to mention, as far as IELTS results or IELTS test is concerned, there's no right or wrong answer to this question. We all just have to focus on the vocabulary and the grammatical mistakes. You can answer, I mean, being agreed to this, that the success is based on the studies, or the No, success but you does can not add, include but you can add both anything things studies. when you are. But in the end, I think, this is my opinion, I might be wrong. I'll stress some more about the grammatical mistakes and sentence structures, and that's that sort of stuff. They don't really consider the facts as we speak. Well, sir, I agree on that. It is completely right that whatever your answer is, they will just judge you on the basis of how you have presented your answer. Either you are right in presenting in terms of vocabulary, in terms of sentences, in terms of that logical coherence, and are you supporting it with some example. So you are right in that. Whatever your answer is, they will not judge you on the basis of either you are going towards it, or you are getting away from that. Means, but the actual thing is, you should at least say, if they ask you something in the form of yes or no, your first sentence should be that either I agree or I disagree, and then you should continue from that, or you should say yes or no, and from that you should take the other things on. Yeah, definitely, because that is a part of answering the question. If you don't clear out your opinion, then you're not really answering the question. Uh, just like, hey, it's asking that can a person become a successful without any studies? So they actually want you to answer that. What do you think the person can be successful with the studies or not? So you can go around and talk about anything that you want, but if you don't answer in a yes or no, I mean, you don't have to use the word yes or no, but your arguments or your lines or your sentences should point out that whether you agree or you do not. So if you do not do that, then you are not really answering the question. In that case, you're definitely going to be, get lower marks. So you have to be careful here. You have to answer the question in a proper way. You have to, go and present your English skills, and along with that, you have to answer the question. Okay, well, if you have a lots of opinions and you know about the realistic things, I think if you speak in appropriate ways, so you have to speak by your own opinions. That is up to a person who want to giving their answers. That is all about the examiner and the participant who giving their answer. So anyone can give answer throughout the differentiate about the successful and the studies. They can also even explain these things with their observation in their real life society or in real life experience, that the successful and the studies is a different thing according to me. So that's why I answer related to that thing. Cool. Ma'am, can we move to the next question? Okay, how do people react when they do not succeed for long time?
people who not get successful in their life from the long time, they mostly blame the system or the surroundings to criticize them, uh, and you can say stop being noticed in that things. Okay, anyone else? Well, I think that it really depends on the person. Some of them gets depressed or frustrated, and the other ones, on the other hand, few people remain motivated and they still go forward and try hard to achieve whatever they want to achieve. So obviously, when you are trying to achieve something, when you are trying to get a hold of something, and in the end you end up losing it, and you're not successful in the end, obviously you're gonna be frustrated, and you're gonna be or people gonna be depressed, and they would lose hope, and they would stop trying. But we also have some people that actually do not consider hope as an option. They just keep trying and trying and trying until they achieve something. So it really, for me, according to my opinion, it really depends upon person to person, how they react to their failure. Okay. How does society look differently at more successful people than less successful people? Does anyone want to answer this? Anyone who can answer, they can maybe answer. I'm thinking. Maybe you can. Okay, should I answer? Yes. Okay. Well, according to me, if we talk about the society, then they are more inclined toward the more successful people. I mean, they are really influenced by the people who have achieved some sort of success. For example, if we talk about Elon Musk, and if on the other hand you have me, and obviously Elon Musk has much more to offer. He has much more. He has achieved much more in his life, and he has a lot more experience. Then definitely, if he says something against, as opposed to me, people will definitely look up to him, and they will consider his saying the more valid as compared to mine. As far as we're concerned as a society, we look towards the most successful people than the lesser ones. Okay. Do you think people would be hyper if they did not have any goal to achieve? Well, actually, it's an interesting question. Uh, Being happy is associated with the goals. I mean, you can't be happy if you do not have anything to achieve. I mean, uh, I will not be happy if I don't eat, for example. I mean, I'm hungry. I want to eat something. So if I don't eat, I'm not gonna be happy about it. Uh, so my goal is to eat something. My goal is to